नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडिया का बुलावा। व्हाई इज चाइना कॉलिंग ऑन इंडिया, राइट? और व्हाई इज इंडिया कॉलिंग चाइना? क्यों? लुक एट दिस कार्टून। जी जिनपिंग वांट्स टू टेक अ टाइम आउट। जी जिनपिंग क्यों टाइम आउट लेना चाहता है इंडिया से? ये आज का व्याख्या है। मैंने पहले सोचा था कि इंडिया का इर्द गिर्द देशों में चाइना का क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में बात करूं। However, I kept India's neighbors aside because एक जो headline है, it caught my eye, and this headline which came up today in South China Morning Post is significant, and ये है वो headline। ये headline क्या बोलता है? Why is India's status amongst ASEAN nations rising? Very interesting। ये दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि ये जो विश्लेषण है चाइना से आ रहा है। चाइना इज ऑब्वियसली वरीड, दे आर परप्लेक्स्ड। व्हाई इज इंडिया स्टॉक गोइंग अप इन एशियन नेशंस, राइट? लेट्स सी इट क्लोजर। एक सर्वे किया गया था जिसमें साउथ एशियन नेशंस, एशियन देश, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, म्यांमार इंक्लूडेड, they see India as an ally, potential ally. And ये जो alliance they are seeking with India is more than what they attribute to Australia, UK, South Korea. यानी जो ट्रेडिशनल उनका जो allies हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ कोरिया, उससे ऊपर है हमारा दर्जा। और उनको फिक्र है यूएस और चाइना का जो किटपिट चल रहा है। They see India as a safe bet. They see India providing stability regionally. And there are three factors in this article they have said कि ये सब तब हो रहा है जब हम यूक्रेन के बारे में वी हैव टेकन अ न्यूट्रल स्टैंड। हम रशिया के अगेंस्ट नहीं गए, राइट? वी हैव नॉट कॉल्ड आउट रशिया। हिंदू नेशनलिज्म जो बोला जाता है बढ़ रहा है, उसको नजरअंदाज कर दिया। इट डजंट मैटर। And the citizenship issues which are perceived as anti-Muslim, यानी इस्लाम के विरुद्ध, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। कुछ तो होगा क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देश में काफी मुसलमान रहते हैं। The fact that India's status is rising amongst Asian nations is reported by South China Morning Post indicates China is worried. Okay, ये हेडलाइंस देखिए। G20 tensions flare over Russia's invasion of Ukraine as India resists putting the word war in official statements. Very interesting again. Why is it interesting? क्यों? ये इसीलिए महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। एक जमाने में इंडिया के पास उतना ताकत नहीं था, उतना शक्ति नहीं था कि वो सबको, अमीर देशों को बताए हम जो स्टैंड लिया उससे हम हटेंगे नहीं। नंबर एक। नंबर दो, G20 का प्रतिनिधित्व हमारे पास है। एज अ चेयर ऑफ G20 वी हैव हैड आवर वे एंड अदर्स हैव हैड टू लिसन, इंक्लूडिंग यूएस, यूके एंड ऑल दोस अदर countries and the European countries. In a different era, this wouldn't have been possible. वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं,
ये जो इंडिया का शक्ति है, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में रिपोर्ट हो रहा है और उनके हेडलाइंस में। इसका महत्वपूर्ण इसमें है। तीसरा हेडलाइन, जर्मनी's Olaf Scholz seeks Indian support to isolate Russia over Ukraine. ऐसा रिपोर्ट हुआ है फ्रॉम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट दैट he has come to seek our support so that Russia is not given support or isolate रशिया, रशिया को अलग रखने के लिए। बट हमें भी पता है कि वो आए हैं, वो तो एक बात होगा, बट ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए, आईटी सेक्टर में वीजास बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास आदमी नहीं है। और ये जो रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया टू बी एलिवेटेड टू अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। वैसे भी हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप फ्रांस के साथ है ही ईयू में। अब जर्मनी भी आ रहे हैं साथ सामने। अगर ये तीन मेजर हेडलाइंस देखेंगे तो बड़ा क्लियर है कि इंडिया इज राइजिंग। ये जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला, चाइना इज एन एक्सेप्शन, इंडिया सेज इट हैज गुड टाइज विद ऑल बिग पावर्स बिसाइड्स वन। उन्होंने बड़ा साफ संकेत दे दिया कि चाइना के साथ हमारा ताल्लुक अच्छे नहीं है और रिलेशनशिप विद चाइना आर स्ट्रेन्ड, वी ऑल नो दैट, बट ही स्टेटेड इट, and this is not the first time he stated it, he's said this in other conferences. Again, this gets reported from a major Chinese media platform. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बता रहे हैं अभी, और उनको बताया जा रहा है कि भाई हमारे आपके साथ संबंध ठीक नहीं है, आप सतर्क हो जाओ। And there is a lot of internal talk about saying that we don't call out China. Well, for whatever reason it is, we have avoided calling each other out. हम सीधा ये नहीं बोलते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, या चाइना ये नहीं बोलता है इंडिया हमारा दुश्मन है, राइट? तो ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। और हमारा, और एक और बात है, इससे बड़ा सिग्नल देना भी उचित नहीं है, क्योंकि इट विल बिकम नेगेटिव, it will be, might become counterproductive in the long run, right? We have to be clear as to how we have to deal with China. And as I have been saying in many talks over quite a few years now, one has to be patient when dealing with China. चाइना के साथ जल्दबाजी में अगर कुछ करेंगे तो महंगा पड़ेगा, right? This is another interesting article, right? 4 reasons Adani Group scandal isn't enough to turn investors bearish on India. इन्होंने इधर 4 रीजन बताया कि नॉर्मली अगर इतना बड़ा ग्रुप, अदानी ग्रुप अगर डूब गया और आज का दिन उसका वैल्यूएशन भी कम हो गया है, तो एक जमाने में इंडिया के बारे में इंडिया भी लड़खड़ाना शुरू हो जाता, वी वुड हैव बीन शेकी, बट नॉट एनी मोर. So what if one Adani group goes down? It's not gone down as it, it's going through a rough patch. Let's see. But even if it goes down, people are okay. फिर भी आना चाहते हैं. वो पहले 2-4 पॉइंट जो उन्होंने बताया, हिंदू नेशनलिज्म, एंटी इस्लाम, ये सब सबको पता है. उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ का ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, यहाँ आपको बिजली नहीं मिलेगा, right? Corruption is rampant in India. All these things are there. And despite that, people are not bearish about India. People are in fact bullish about India. This article and the one about Asian nations should convince us, right? हमारे अंदर ये क्लैरिटी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए that India has become
far bigger than what it was, say, about even 5 years back or 10 years back, in terms of its strength. Right? Again, this article also. ये आर्टिकल बोलता है इंडिया फेसेस स्लो रिटर्न टू ग्लोरी डिस्पाइट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एयरबस पब्लिक बोइंग एयरक्राफ्ट. This is the fact that this is the largest order. It's going to do wonders for our economy. It's going to do many things. The potential, at least, is known, and that gets reported, but with a tinge of salt. Okay, the salt is bureaucracy, corruption, image, old image. Can India turn over? क्या इंडिया सुधर सकता है? इनके जो बाबू लोग हैं सब में रोक लगा देंगे. कंपटीशन है एयर इंडिया को. ये सब आलोचना होगा, पर ये मत भूलना कि अगर एयर इंडिया के पास 500 एयरक्राफ्ट है तो इंडिगो के पास भी उतने ही है तकरीबन. ये दोनों एयरलाइन मिला देंगे तो इंडिया का शक्ति काफी ऊपर है. एंड एज पर वन फोरकास्ट व्हिच आई रेड 2 years back or 3 years back, India will be the biggest air operator in this region. And the centrality of India, क्योंकि इंडिया का लोकेशन जो बिल्कुल मध्यांतर में है, ये पूरा इंडिया अफ्रीका के लिए, वेस्ट एशिया के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए, इसकी वजह से एक इंडिया कैन बिकम अ मेजर एमआरओ हब. एंड माय गेस इज इट्स गोइंग टू बिकम with the way things are going. 2 years back, when I spoke of this in an event in Tamil Nadu, as part of the Tamil Nadu Defense Corridor consultations, people looked at me like a fool about 3 years back, before the COVID. But अभी सच हो रहा है ये, right? Okay, this article is a little different. It's contra to what I have spoken so far. It talks of Ukraine war. 1 year on, China's neighbor intensify regional arms race. Very, very important article in the context of India. ये आर्टिकल में बताया गया है, अगर आप पूरा देखेंगे, राइट, कि जो चाइना का नेबर्स जो हैं, यानी कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम, राइट, ये सब को खतरा है चाइना से और उनको खतरा महसूस हो रहा है. दे आर एक्सपीरियंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम चाइना. दिस थ्रेट फ्रॉम चाइना, ये इट स्टार्टेड when China fired all those missiles around Taiwan, when Nancy Pelosi came last year. Ever since then, slowly and steadily, ये जितने देश हैं इर्द गिर्द, वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. एंड दे हैव come become a network. And USA has returned into this area in Philippines to have 4 bases. 4 बेस होंगे यूएसए के लिए. अगर ये सब वहां हो रहा है तो चाइना गेट्स कंटेन्ड. ऊपर और तो और जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया का सामना किया, राइट, एंड द वे यूक्रेन हैज फॉट दिस वॉर विद रशिया has given them hope. Taiwan has become a virtual porcupine which China cannot swallow. And additionally, if all these countries become strong in that area, China gets contained. ये आर्टिकल मैं क्यों लेके आया हूं? We have seen 4 articles or 5 articles which speak of India's rise being reported from China. And this is a contra article. If you look at it, China has now started perceiving us as some kind of a competitor. Not a full-fledged competitor, but it knows we are competing. The day is not far when it will start looking at us as a threat. As it is, you're a threat.
आप उनको इसीलिए थ्रेटन कर रहे हो क्योंकि उनका बिजनेस छीन रहे हो आप उनका इन्फ्लुएंस छीन रहे हो। ठीक। अगर आपने इन्फ्लुएंस ज्यादा एशियन में हो गया और इंडो पैसिफिक देशों में हो गया तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहां घटेगा ही घटेगा। सो दे हैव टू लुक एट इट, दैट इज व्हाई। एंड इसके अलावा look at this map in detail. The inner red line is of the first island chain, right? Which joins South Korea, Japan, Taiwan, Philippines, and Vietnam. And also touches Indonesia and Malaysia. मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा लाइन है ये चाइना का सामने का दरवाजा है, फ्रंट डोर। ये सामने का दरवाजा क्यों है? The east coast of China is the rich area, right? Shanghai and all these major ports are on the east coast. The east coast of China is the rich coast, अमीर कोस्ट है, सबको पता है ये। तो ये सामने का दरवाजा है। जहां तक भारत है, भारत का जो एलएसी है पूरा, जो आप देख रहे हो, राइट, ये उनका पीछे दरवाजा है। अभी अगर आप देखेंगे ये जो पिछला आर्टिकल है, ये है नेबर्स इंटेंसिफाई रीजनल आर्म्स रेस, राइट। If you see, all the neighbors who intensify the arms race against China are in the front door. वो सामने के दरवाजे में खड़े हैं। इंडिया का ताकत बढ़ रहा है और वो पीछे के दरवाजे में खड़ा है। आप खुद देखिए, अगर आपके घर के ऊपर वार हो रहा है, and if someone attacks your house and he's at the front door, and at simultaneously अगर पीछे के दरवाजे में भी किसी ने अटैक किया तो आपका क्या हाल होगा? This is a classic pincer movement. This is a geopolitical pincer which China is getting into. And China ये चाहेगा कि इससे बाहर निकले. China will not like to continue in this and harden its position against both. So what does China do? This is what China will do. It knows that its rear door is weak. I have always been of the opinion that China's rear door is weak. It is rear. We think that they are very strong against the LAC, but I personally feel they're very weak on the LAC because the entire hinterland of Tibet is a question mark. इसीलिए they will make peace with us. And this I'm not telling now. मैंने ये बात कि चाइना दोबारा वापस नहीं आएगा और धीरे धीरे हम शांति की ओर चलेंगे, ये मैं 2 साल पहले मैं डेफ टॉक्स में बता चुका हूं और ये हो रहा है अभी। ये क्यों हो रहा है? China and India affirm progress in disengaging troops in first face-to-face border talks since deadly clash. And ये where has these talks taken place? ये बातचीत हुआ है बीजिंग में। ये फौजियों के बीच में बातचीत नहीं है। This talk is between diplomats, officials, civilians, right? Disengagement जितना था होना था हो गया है। This is the next step. इसका मतलब जो भी मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि डिसएंगेजमेंट खत्म हो गया है। डिसएंगेजमेंट अभी भी चाहिए हमें देपसंग में और डेमचौक में। वो होगा पर देरी होगा। जैसे एज आवर पावर कीप्स गोइंग अप, एज इंडिया कीप्स राइजिंग एंड चाइना फील्स द पिंच, ये जब उसका सामने के दरवाजे में भी दबाव आएगा और इंडिया के शक्ति से भी पिछले के दरवाजे में दबाव आएगा, एक न एक दरवाजा के साथ उसने सलूक करना ही है।
वो अभी हमारा साथ मेरे ख्याल में सलूक करना अ, उचित समझा है। पर क्या ये प्रोग्रेस जल्दी होगा? नहीं, इसमें भी हमें शांति बरतना पड़ेगा। वी हैव टू बी पेशेंट। इट्स नॉट गोइंग टू टेक be done in a hurry, right? So there's a change. There's a subtle change in the overall scenario, right? And this is what I wanted to put across. And I'll still put across the next video about Chinese activities in our neighborhood और हमारे नेबरहुड में उनका क्या गतिविधियां हैं, उससे क्या हो रहा है, वो हम देखेंगे। पर हमारा देश के साथ चाइना का जो इक्वेशन है वो बदल रहा है, राइट? ये तो हमने देख लिया। ओके, ये भी बात है। वो जो जॉर्ज सोरस, ही स्पोक आउट ऑफ टर्न। ओके, सो अ फॉरेन मिनिस्टर has called him old, rich and dangerous. India minister lashes out at billionaire critic, demands democracy debate, right? सोरोस ने आलोचना किया है हमारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर। आई मीन माय पर्सनल थिंग इज हु इज ही, वी शुड इग्नोर हिम। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग होंगे जो सोरोस का साइड लेंगे हमारे देश में भी, बाहर तो लेंगे ही लेंगे। वी हैव सेड whatever we had to say. Interesting thing is it gets picked up there. Okay, and we say we lashed out at him. All part of the story, India calling. You know, we have to be clear that there's a change which is happening, and unless we are clear about that, we will not know how to deal with China. In the last episode on the big worry and decoupling, 2 episodes, I have highlighted how China is changing internally. I'll get back to the internal later, but today I tried to highlight how China perceives India changing. कैसे इंडिया बदल रहा है और उनका दृष्टिकोण क्या है हमारे बारे में. That was what I have tried to put across on this. Right. ये भी बोल रहे हैं कि amid China India border row, rapid development takes a toll on Himalayan wildlife and environment. Right. Now, in this article, it is said that all development which is India is doing, and the your border infrastructure which is building up and all that, will take a heavy toll on Ladakh and the environment there and wildlife and ये वो. मेरा सवाल एक ही है, क्या एक तरफा है ये? उनका जो डेवलपमेंट जब हो रहा था तिब्बत में, कुछ नहीं हुआ प्रदूषण के लिए या एनवायरनमेंट के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए? क्या जब हम इंडिया से लेते हैं तभी होता है? पर ये ऐसे आर्टिकल तो आना ही आना है। जब हमारे बारे में आर्टिकल्स जो पॉजिटिव रूप में आएंगे तो नेगेटिव रूप में भी आएंगे। देयर विल बी नेगेटिव आर्टिकल्स, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? दूसरी बात ये है, ये कहीं मैंने ना अमेरिकन इसमें पढ़ा है ना मैं इंडियन न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हूँ, पर ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, क्योंकि इफ दे नीड सम स्मॉल थिंग टू पुट इट अप, इंडिया टू टाइटन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी चेक्स अमिड यूएस सुपरबग आउटब्रेक। दे हमें सबको पता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ह्यूज, राइट? एंड इट इज got its own stature and influence, and it earns us a lot of foreign exchange. So anything to break that negative will be reported. Well, there might be some problem, and you know, ये जो article है, it's a little insidious. It doesn't point finger directly at our pharmaceutical industry or at India, but
It is insidious enough to say tighten pharmaceutical quality checks. That means it indicates कि कुछ गड़बड़ है हमारे देश में. हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज नॉट अप टू द मार्क, कि हमारा इनका स्टैंडर्ड्स और स्तर कम है. ये सब इफ यू अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये चुगली वाला आर्टिकल है ये, पर चुगली तो होगा ही, राइट. तो ये थे जो आज का विषय इंडिया कॉलिंग. 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैंने नहीं सोचा कि मैं दोबारा इतना जल्दी मैं इंडिया के बारे में निकालूं या वीडियो कास्ट निकालूं. बट हाउ इंडिया इज बीइंग परसीव्ड इज absolutely changing. Absolutely. I mean, for me, it's a revelation. Yeah. 2 years back, articles coming out of South China Morning Post about India were disparaging. Today, the tone has changed. रुख बदल गया इंडिया का, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का बोली भी बदल गया. राइट. इतना ही है इस शॉर्ट एपिसोड में. राइट. अगले एपिसोड में जरूर हम इंडिया के नेबर्स के अंदर, हमारे जो इलाके में, नजदीकी इलाके में, वहां चाइना का क्या गतिविधियां हैं. विल टॉक अबाउट आवर नेबर्स एंड चाइनीज एक्टिविटीज देयर. थैंक यू एंड जय हिंद.